Question number 9 of the worksheet Kinematics. A particle P is held at rest at a fixed point O and then released. P falls freely under gravity until it reaches a point A, which is 1.25 meters below O. Okay, so there's a starting point O, and from this point O, a particle is released downwards and it falls freely uh, till it reaches a point A. So it reaches here, which is 1.25 meters below O. So that means this distance would be S is equals to 1.25. And it was released from rest, so U is equals to 0. And it falls freely under gravity. That means its gravitational acceleration is, it's falling down, so plus 10 meters per second square. Okay. Find the speed of P at A and the time for which, and the time taken for P to reach A. So now we need V and also T. So for V, we can use V square equals U square plus 2AS. So that's going to be square root of 0 square plus 2 times 10 times 1.25, which is 5. The particle continues to fall, but now its downward acceleration t second after passing through A is given by this. Okay. Now acceleration has its own formula, and that means the value changes with t. That means it's no more straight line motion. That's why we cannot use equations of motion anymore. Instead, we have to use the given expression for A. Okay. So after, अच्छा हमने t भी तो निकालना था. I did not find t. So for t we can do v is equals to u plus at. So v is 5 is equals to 0 plus 10t. So t is 2.5 seconds. Sorry, 0.5 seconds. Okay. So we found v at a, which is 5, and we found t at a, which is 0.5. By using equations of motion simply, because this is a straight line motion with constant acceleration. अब next part में, as it goes down, the acceleration is not constant anymore. उसकी एक value given है, which is, उसकी एक expression given है, 10 minus 0.3 t. Okay. So the particle continues to fall, but now its downward acceleration t seconds after passing through A is this. Find the total distance taken. Find the total distance P has fallen 3 seconds after being released from O. Okay. So in a further 3 seconds, कितना distance cover हुआ? So in a further 3 seconds, this is for A, or let's say further 3 seconds बाद, let's say it's here. Okay. Now we're looking at this part of the motion, which isn't going to be a straight motion, straight line motion. एक curve हो जाएगा थोड़ा सा. Okay. So from A till the end of this motion, the time covered or the time taken would be 3 minus 0.5 seconds. Why is that? I'm saying that in the second part of the journey, for second part of the journey,
टाइम वुड बी, टोटल 3 सेकेंड्स है और उसमें से 0.5 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर लिए, सो 2.5 seconds. I'm saying that it takes 2.5 seconds to go from here till here, because time here is 0.5 seconds and time here is 3 seconds. So in the total time taken for the second part of the journey is going to be 2.5 seconds. So I'm going to write for the second part, t is equals to 2.5 seconds from 3 minus 0.5. Okay. Now we have to find the distance. To find the distance, we have to first find velocity from acceleration by integrating the acceleration, and then we find the distance by integrating the velocity. So SV would be integrate 10 minus 0.3 t, which would be 10t minus 0.3 t square upon 2. And we need to find the value of c plus c, because we will have to integrate this again. Okay. To find c, I need a t and the corresponding value of v. So at the start of the journey, v is 5 and t would be 0 लेंगे. Sorry, 0 नहीं लेंगे, 0.5 लेंगे. Time here is 0.5. So v is equals to 5 at time 0.5 seconds. So substitute that here and you will be able to get C. 5 is equals to 10 times 0.5 minus 0.3 upon 2, 0.5 square plus C. इससे आ जाता है C is equals to 0.75. So now we have an expression for velocity, which is 10t minus 0.3 upon 2 would be 0.015 t square and plus 0.75. ये आ गया velocity का expression. Now we have to find the displacement. So x equals, integrate this with respect to t again. So we get 10t square upon 2 minus 0.015 t cube upon 3 plus 0.75 t or plus c. Now we need a sorry. Okay, now we need a corresponding value of t and x so that we can find c. So again at t 0.5, जो displacement थी वो थी 1.25 from first part of the journey. So ये देखो इस पार्ट में हमें पता है कि when time is at a, the distance covered is 1.25 and the time is 0.5. इसको यूज करके c निकाल लेते हैं. Okay. So that's going to give us time जो है वो 0.5 है और distance है, what was it, 1.25. Yes. So find c. So we have 1.25 is equals to 10 by 2
0.5 squared minus 0.015 upon 3, 0.5 cube plus 0.75 times 0.5 प्लस सी। अभी इससे सी आता है 1.5. When you solve this, rearrange this, you get 1.5. So now the expression for x would be, I'm writing 5t square minus, ये divide करके क्या आता है 0.015 divided by 3 is 0.005. अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है 0.3 divided by 2 ये दिस वाज 0.3 divided by 2 तो मुझे इसको 0.15 लिखना था 0.15 सो वो यहाँ पे भी आएगा it's actually 0.15 and when we divide this with 3.15 divided by 3 we get 0.05 so now it's correct so minus 0.05 pq plus ये भी गलत आ रहा है चेक 0.75 नहीं लिखा हुआ C is I'm sorry यहाँ पे ना C5 आता है ये मैंने गलती की हुई है यहाँ जो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी आई सेड V is 5 at the end of A मतलब at A V was 5 T was 0.5 and C also comes out to be 0.75 let me check this ये आ नहीं रहा according to the answers 5 minus 0.15 into 1.5 square अच्छा नहीं इससे नहीं आंसर आ रहा द मिस्टेक आई मेड इज कि जब हम इस पार्ट को देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी को यहाँ से लेकर यहाँ तक सो इधर आप कहोगे कि टाइम 0 से स्टार्ट हुआ है टाइम here will start at 0 and it it's a 2.5 seconds time lapse so it's going to be t is equals to 2.5 at the bottom so हमने इसको एज a सेपरेट जर्नी लेना है सो हम कहेंगे इसका स्टार्टिंग टाइम अगर 0 है तो इसका एंड टाइम 2.5 है क्योंकि वी नो टोटल जर्नी टाइम इज 3 सेकेंड्स और यहाँ से यहाँ तक हमने पहले ही निकाल लिया था 0.5 seconds so if that's 0.5 seconds then this is going to be 2.5 seconds so इसका अपना टाइम you can't say कि ये 0.5 सेकेंड से जर्नी स्टार्ट हो रही है और 3 seconds तक जा रही है नो फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नी आप कहोगे कि टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज टिल 2.5 सो दैट्स द मिस्टेक आई हैड मेड मैंने टाइम इसका 0.5 ले लिया था लेकिन वो तो प्रीवियस जर्नी का एंड टाइम है फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी वी नो कि ये सेकेंड पार्ट 2.5 seconds लगाती है सो फिर हमने इसको 0 से स्टार्ट करना है टिल 2.5 so I should have written V is 5 when T is 0 यहाँ पे 0 होना चाहिए था
एंड व्हेन यू डू दैट तो फिर अब C5 आ रहा है, बिकॉज द t's बिकम जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, so this is zero, this is zero, so C comes out to be 5. You get V is equals to C, तो V 5 है तो C भी 5 आ जाता है, so यहाँ पे 5 आना चाहिए. Okay, इसको नीचे लेके जाएंगे. So after integrating we get 5t here, not 0.75t but 5t, और अब उसका प्लस C आ गया. ओके, अब फिर हमने टाइम जीरो लेना है. एट टाइम जीरो डिस्प्लेसमेंट इज 1.25, 0.5 नहीं लेना था, सो दिस वुड बी जीरो. ओके, और ये 5 था हमारा, और टाइम को हमने करना है जीरो, सो दिस वुड बिकम जीरो, जीरो एंड जीरो. या एक और काम किया जा सकता है, सी को बाईपास कर देना चाहिए था इधर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है एंड द टाइम इज फ्रॉम 0 to 2.5, तो वो बेहतर हो जाता. अच्छा, अब हमने टाइम जीरो भी नहीं लेना, आई एम सो सॉरी. टाइम जीरो नहीं लेना, वे फाइंडिंग द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी, एट दिस स्टेज, सेकेंड स्टेज की बात हो रही है. तो इसमें टाइम में मुझे जीरो नहीं लेना चाहिए, मुझे तो 2.5 लेना चाहिए, बिकॉज आई नीड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम हेयर टिल हेयर. तो व्हाई एम आई टेकिंग t इज इक्वल्स टू जीरो, दैट्स रॉन्ग. मुझे t 2.5 लेना है, या बेहतर ही हो जाता मैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स यूज कर लेती फ्रॉम 0 to 2.5, उससे प्लस c का ही मसला खत्म हो जाता. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. और इन एनी केस t जीरो नहीं लेना था, दैट्स another mistake I made. So this is going to be, I'm going to integrate this now, but I'm going to integrate it from 0 to 2.5 just to get rid of the hassle of finding C. Okay, so we know the the time taken in the second part of the journey 2.5 seconds लगते हैं. So 0 to 2.5, और हम integrate कर रहे हैं V को, which is 10t minus 0.15t square plus 5. Okay, so that gives 10t square upon 2 minus 0.15 t cube upon 3 plus 5t, and the limits are 2.5 to 0. 2.5 से एक आंसर आएगा और 0 से एक आंसर आएगा. 0 से तो 0 ही आएगा, और 2.5 से आना चाहिए 42.97. Okay, this is the time for the second part of the journey. Sorry, this is the distance for the second part of the journey. और first part of the journey का भी distance हमें पता है, that was 1.25. फिर यहाँ पे this is 1.25. So add 1.25 and the answer we just got, and that should be the final answer. 42.97 plus 1.25, which gives 44.2, which is the answer. 44.22, which you may round to 44.2. So this was a tricky question. The only thing different in this question and the other questions is के first part of the journey is a straight line movement. उस पे हमने यूज कर ली equations of motion. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी एंड हुई 0.5 सेकेंड पे.
ठीक है। और टोटल जर्नी टाइम है 3 सेकेंड्स। दैट मीन्स जो सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी है उसका अपना टाइम 2.5 सेकेंड्स है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में हम जो इक्वेशंस वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उसमें हम टाइम यूज करेंगे स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। को सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी अब जो स्टार्ट हुई है वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं है। इट्स गोइंग टू बी कर्व मूवमेंट बिकॉज दैट इज एविडेंट फ्रॉम द ए गिवन टू अस। ए कांस्टेंट नहीं है, ए क्या एक पूरा एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टी। फॉर एवरी टी द एक्सेलरेशन चेंजेस। तो अब आपने जो टाइम लेना है फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी वो लेना है टाइम इज इक्वल्स टू जीरो टिल टाइम इज इक्वल्स टू 2.5। You can't take time is equals to 0.5 to time is equals to 3, वो गलत हो जाएगा। Because the second part of the journey is independent, तो उसके लिए हम कहेंगे कि इसका टाइम जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 2.5 सेकेंड्स तक जा रहा है। एंड वेन एवर पॉसिबल, जब आपके पास आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी और आपके पास अगर टी की लिमिट्स हो तो उसी को यूज कर लिया करो। डोंट गेट इन द हैसल ऑफ फाइंडिंग प्लस सी बिकॉज वी आर मोर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स when we make our working longer. So always substitute limits of integration if they're available in the question. Like they were in this question, हमने फिर कर लिया था 0 से 2.5 seconds तक हमने displacement find की। Okay. इसको प्लीज एक दफा दोबारा इंडिपेंडेंटली कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस टुक अ व्हाइल। Something wrong with the board, just give me a second. Okay. A motorcyclist starts from rest at A and travels in a straight line. For the first part of the motion, the motorcyclist displacement x meters from A to T. A after T seconds is given by this. Displacement का function given है. Show that the motorcyclist's acceleration is 0 when T is equals to 50 and find the speed at this time. अब acceleration की बात हो रही है। Acceleration आती है from dv upon dt और v आता है from dx upon dt. So we will have to derivate this given expression 2 times और फिर उसका acceleration 0 करके टाइम निकाल लेंगे। ओके, सो पहले v निकालते हैं from dx by dt which is 0.6 into 2 हो गया 1.2t minus 0.004 into 3 हो गया 0.012 t square. Okay, this is the expression for v. Now let's find the expression for acceleration, which is going to be dv upon dt. वो हो गया 1.2 minus 0.024 t. Show that the acceleration is 0 when time is equals to 50. So acceleration 0 कर लो और show that you get t is equals to 50. So you get 0.024 t is equals to 1.2
अब इनको डिवाइड कर लिया, 1.2 divided by that is 50 seconds. So we have shown कि जब acceleration 0 है तो time 50. And find the speed at this time. तो speed का हमने expression तो निकाला हुआ है. अब इसमें time की value 50 substitute कर लेते हैं. So v is equals to 1.2 50 minus 0.012 50 squared, which gives 30 meters per second. Okay. Next part is when time is greater than equals to 50, the motorcyclist travels at a constant speed. Okay. Find the value of t for which the motorcyclist average speed is 27.5 meters per second. Okay, average speed की बात हो रही है तो फिर हम average speed का formula use करेंगे, which is total distance over total time. अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का डिस्टेंस चाहिए और सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी का डिस्टेंस चाहिए. फर्स्ट पार्ट जो है उसका डिस्टेंस तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और t इसमें 50 डालेंगे. हम x is equals to 0.6 times टाइम 50 था 50 स्क्वायर माइनस 0.004 50 क्यूब कर लेंगे. तो ये आता है 0.6 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 1000 आता है. So x comes out to be 1000 first part of the journey. So यहाँ आ गया 1000 plus okay. Second part of the journey का distance क्या है हमें इसके लिए बताया हुआ है that the speed is constant. ठीक है, तो हमें पता है speed is equals to distance over time होती है. Time is greater than 50, उसको t ले लेते हैं और speed is constant which is v, फिलहाल v ले लेते हैं और that gives us the distance. ठीक है, और v जो है that stays constant, तो v हमें पता है 30 आई थी लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के एंड में. it was 30, so ये 30 होगी because now it stays constant. So this is 30 into t is equals to distance. So for the second part of the journey the distance is 30t. For second part जो distance होता है x is equals to speed into time होता है. speed constant है which is going to be 30, time t है, so ये आ गया 30t. so यहाँ मैंने लिख लिया 30t upon total time. अब टोटल टाइम फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का 50 है और सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी का सम वैल्यू है आफ्टर टी. सो आई एम कॉलिंग दैट 50 for the first part and plus t for the second part. So total time is 50 plus t.
and this is equals to the average speed जो question में given है 27.5. So equate this to 27.5 और इससे time निकाल लेना. Okay, so let's do that. 1000 plus 30t is equals to 27.5 into 50, which is 1375 plus 27.5t. चलिए इसको सॉल्व करके आएगा टाइम इज इक्वल्स टू 150 एंड दिस इज द टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी. फर्स्ट पार्ट का 50 था, सो टोटल टाइम हो गया 50 plus 150 which gives 200. So the answer is 200 seconds. इस क्वेश्चन का भी पार्ट बी आप प्लीज दोबारा करना विदाउट लुकिंग एट माय वर्किंग, और अगर नहीं हुआ तो फिर इस वर्किंग को दोबारा करना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड दे आर ट्रिकी. They're not very straightforward unlike some of the questions of this topic. चलो जल्दी से एक और स्क्वीज इन कर लेते हैं. Okay. The diagram shows velocity time graph for particle P which travels on a straight line AB, where V is the velocity of P at time t seconds. The graph consists of 5 stages of 5 straight line segments. The particle starts from rest when t is equals to 0 at a point x on the line between A and B and moves towards A. Particle comes to rest at A when time is equals to 2.5. ये नजर आ रहा है कि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और फिर डिक्रीज हो रही है और 2.5 पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है. ये ऑपोजिट डायरेक्शन है और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है. दैट्स व्हाई one part of the graph is underneath the x-axis and the other one is over the x-axis. Okay. फिर क्या है, given that the distance xa is 4, find the greatest speed reached by p at this stage of the journey. अच्छा, इस पार्ट की बात हो रही है. इसका डिस्टेंस 4 बताया हुआ है और इसकी हाईएस्ट स्पीड बताई हुई है. ओके, so distance is area under the graph. So the area would be half times base is 2.5 times height is, इसको x कह लेते हैं, और area is 4. So when you solve this, you get, let me check, 3.2. 3.21. So highest velocity is 3.2. So this value here is 3.2. In the second stage, P starts from rest at A and moves towards B. The distance AB is 48. अब this area under the graph is 48. Because distance is area under the graph. The particle takes 12 seconds to travel from A to B. ये हमें नजर आ रहा है, इसमें +12 हुआ है. And comes to rest at B. For the first 2 seconds of this stage, P accelerates at 3 meters per second. इसकी acceleration given है first stage की. Acceleration होता है gradient rise over run. So you're actually given the gradient. And you have to find the value of V, which is the rise. Rise बताना है.
रन पता है और एक्सेलरेशन भी पता है 3. सो एक्सेलरेशन इज राइज ओवर रन. सो एक्सेलरेशन वुड बी, एक्सेलरेशन बताई हुई है 3, राइज वी है, रन है 2. सो वी आ गई 6. सो दिस वैल्यू हियर इज 6. ठीक है. फिर कहा है द वैल्यू ऑफ टी एच विच पी स्टार्ट्स टू डीसेलरेट ड्यूरिंग दिस स्टेज. ओके, अब ये टाइम बताना है जब वो डीसेलरेशन स्टार्ट करेगा. तो हमें इस पूरे का डिस्टेंस पता है. सो गोइंग टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. एरिया विच इज द डिस्टेंस 48 इक्वल्स, इसके एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू हाइट इसकी ये 6 है, इंटू 6 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो नीचे वाली साइड दिस इज 12 यूनिट्स. सो 12 प्लस इसको कह देते हैं x. फिर x निकाल लेंगे इससे. सो 48 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 इंटू 12 प्लस x. इससे x की वैल्यू आती है 4. एंड इफ दैट्स 4, तो यहाँ पे हो जाएगा +4 वुड बी 8.5. So you're going to do 4.48 plus 4, which is 8.5. Okay, that's part 3. Part 4 में last part की deceleration पूछ रहे हैं. Deceleration is also rise over run. So we can find that. Part 4, deceleration is rise over run. तो इधर का rise second part, last part of the journey का वही 6 है. और रन जो है वो 8.5 से लेकर 14.5 तक, which is how many units? 6 units. So ये जो है ये 6 units हो गया. So divided by 6, तो ये तो 1 आ गई डिसेलरेशन. डिसेलरेशन के साथ -1 नहीं लिखना होता क्योंकि डिसेलरेशन itself means a negative acceleration. Okay, so this was relatively easier. More or less O levels type का question. चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. आई एम सेंडिंग अ न्यू लिंक. जिन्होंने लास्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं पेपर के, प्लीज ज्वाइन.